Assalamualaikum class. So today we are going to discuss chapter 20, the Islamic banking framework, a comparison with conventional banking. So today हम ये discuss करेंगे कि Islamic banking, how is it different from conventional banking, इसके future prospects क्या हैं, and how are its products different from conventional banking. Because you need to understand this, it's not just the change of name that would make a bank Islamic. Okay, so we have to follow all the rules and regulations of the Sharia to make a bank Islamic. So that is why there are several differences in a conventional bank as compared to a Islamic bank. So we are going to discuss these changes today. तो इस्लामिक बैंकिंग जो है एक रैपिडली ग्रोइंग एरिया है. इन द वर्ल्ड इट्स गेन्ड पॉपुलैरिटी रिसेंटली इन द पास्ट फ्यू इयर्स एंड इट हैज बीन रैपिडली गेनिंग मोमेंटम, not just in the Islamic world but in the Western world as well. So in Europe and UK, you can see the Islamic banking is a very popular area these days. स्पेशली इसकी इनोवेशन जो फाइनेंशियल सॉल्यूशंस ये प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि इनके जो नए प्रोडक्ट्स हैं, जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जो कि स्पेशली जिन मार्केट्स को पहले टारगेट नहीं किया जा रहा था, अंडर सर्व थी, इस्लामिक मुस्लिम मार्केट्स जो थी, तो उनको ये सर्व करें और इसके लिए बड़े ही एथिकल बैंकिंग के जो ये सॉल्यूशंस लेकर आते हैं, दे आर वेरी मच इन डिमांड इन द वर्ल्ड. तो स्पेशली मुस्लिम वर्ल्ड में और फिर वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर भी जो इसकी मार्केट है वो कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रही है. इसके अलावा अगर आप इसके अंदर देखें तो इसके अंदर एक इनबिल्ट स्ट्रेंथ भी होती है, बिकॉज इट्स एन एसेट बेस्ड बैंकिंग. ओके, इट्स नॉट just based on the element of interest, speculation और just leveraging, क्योंकि आप सिंपल इन चीजों की बेसिस के ऊपर इस्लामिक बैंकिंग नहीं कर सकते. ठीक है, इट्स एन एसेट बेस्ड सिस्टम जहां पर हर चीज के पीछे कोई ना कोई रियल एसेट या ट्रांजैक्शन होगी, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, जिसको आप कुछ ना कुछ वैल्यू होती है. तो इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस ग्लोबल ग्रोथ ट्रेंड्स. Islamic banking and finance growth has generated considerable interest in financial world in recent years. The concept of Islamic banking has received an encouraging response from different corners of the globe as one discovers its ideological dimensions and practical significance. Given the ability to offer innovative financial solutions for basic financial needs in underserved markets, especially in the Muslim world, and to meet complex financial requirements of the modern times, it is seen as a socially responsible and ethical banking model with considerable growth potential. ठीक है, तो ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है. ये सोशल रिस्पॉन्सिबल और एथिकल बैंकिंग है, स्पेशली ये नॉट सिर्फ जस्ट इन द मुस्लिम वर्ल्ड, इसके लेकिन मॉडल को बहुत ज्यादा फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि ये मुस्लिम वर्ल्ड को एक नए मॉडल देती है जहां पर पहले उनके पास बैंकिंग नहीं अवेलेबल थी और मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप कर रहे हैं. In the Muslim world and increasingly in the Muslim world and increasingly in the West, significant segments of the institutional and retail markets are choosing Islamic finance for their financing and investment needs. So even not just in the Muslim world, even in the West, people are moving towards Islamic finances for their financial needs. The Islamic financial system also draws its strength from it being asset backed in nature and its direct link to the real economic transactions and avoidance of any elements of interest, speculation, any gharar, any leveraging. तो ये इन सारी चीजों से क्योंकि ये सेफ होता है, इसीलिए it's more popular with people. Now, understanding the differences between Islamic and commercial bank is very important. मैं आपको बता चुका हूँ, it's very important because it's not just the change of the name that was going to make something that was illawful, haram, lawful, that is halal. It is the actual model that is different, because Islamic banks do not even act like banks. They are more like trading houses. Okay. So when we look at the differences between Islamic financial institutions and the interest-based conventional institutions, we find out that the differences are on three levels. Okay, तीन levels के ऊपर basic difference. एक तो conceptual and social religious level. ठीक है. The first difference is conceptual and social religious level. के एक तो religious, social और फिर conceptual differences हैं. Then the second difference is बिजनेस मॉडल एंड गवर्निंग फ्रेमवर्क लेवल. ठीक है, कि बिजनेस का मॉडल क्या होगा और उनका गवर्नेंस का फ्रेमवर्क क्या होगा, इसके अंदर भी हमारे सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं विद द कन्वेंशनल बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग के. एंड देन प्रोडक्ट इंप्लीमेंटेशन लेवल के ऊपर भी एक्चुअली डिफरेंसेस होते हैं इन इस्लामिक एंड कन्वेंशनल बैंकिंग, बिकॉज यहाँ पर प्रॉपर प्रोडक्ट के अंदर इंप्लीमेंटेशन करवाई जाती है शरिया रूल्स की. Without a clear understanding of these differences, some people, even experts, tend to make a common mistake of equating Islamic banks with other conventional banks with a mere change of name.
Now, the key differences between Islamic banks and conventional interest-based banks. So, सबसे पहले, at conceptual and social religious level, Islamic banks are not money lending institutions, but they work as trading investment houses. ठीक है ना? तो ये money lending करते ही नहीं, कर ही नहीं सकते वो, क्योंकि सोशल एक्टिविटीज का पार्ट हो जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इस्लाम इसको नहीं डालता, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। सो दे आर एक्चुअली एक्टिंग एज ट्रेडिंग हाउसेस और इन्वेस्टमेंट हाउसेस, ठीक है, जो ट्रेड कर रहे हैं, चीजें बेच रही हैं। So they act like that. Whereas conventional are interest-based banks and are in the business of lending and borrowing money on interest. तो conventional जो है वो नॉर्मल बैंक से इंटरेस्ट बेस्ड हैं, वो पैसे को लेंड और बोरो करते हैं एट विद द इंटरेस्ट, ठीक है। इस इस्लामिक बैंक्स वर्क अंडर सोशियो रिलीजियस गाइडलाइंस दैट प्रोहिबिट चार्जिंग and paying interest and avoid all impermissible transactions that like gambling, speculation, short selling, sale of debt and receivables. तो इस तरह की चीजें सारी की सारी इस्लाम में बैन है कि वो एक तो सोशल रिलीजियस होती हैं, ठीक है, सोशल एलिमेंट को भी कवर करी होती है, रिलीजियस एलिमेंट्स को भी कवर करी होती हैं। कोई इंटरेस्ट वगैरह की चार्जिंग नहीं होती और कोई भी इस तरह की ट्रांजेक्शन नहीं होती जो कि गरर का एलिमेंट ले आए या गैम्बलिंग ले आए, स्पेकुलेशन ले आए, शॉर्ट सेलिंग ले आए, डेट की सेल कर दी जाए या इस तरह की कोई चीज रिसीवेबल्स की सेल करती है, ऐसी कोई चीज अलाउड नहीं है। जबकि सीबीज डू ऑल दिस, ठीक है, कन्वेंशनल बैंक्स दे डू ऑल दिस वर्क, they do not work under any social religious restrictions. Interest is the backbone of the system, and short sale of debt and speculative transactions are very common in conventional banks. Then Islamic banks do not permit the financing of industries that are prohibited in the Sharia or harmful to society, such as arms, alcohol, and tobacco manufacturing, etc. तो ये सब के ऊपर परमिशन नहीं होती इस्लामिक बैंक्स की इन्वेस्टमेंट करने की। हाउएवर कन्वेंशनल बैंक्स को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो इन तब सब तरह के सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो करते भी हैं क्योंकि इनमें से उनको रिटर्न अच्छा मिल जाता है। So CBs finance all types of industries. Only businesses deemed illegal by the law of the land are not supported. Moving forward, all business models now at the business model and governing framework level के ऊपर क्या differences आ जाते हैं। So the Islamic bank's business model is based on trade. This Islamic bank needs to actively participate in trade and production processes and activities. ठीक है, तो वो trading based business है, so it's not an interest based business, it's a trading based business। और उनके constant ये उनकी activities का part है कि वो participate करते हैं trade और production और processes के अंदर, ठीक है। जबकि CBs do not, conventional banks do not involve themselves in trade and business as they are act only as money lenders, ठीक है। वो सिर्फ मनी लेंडर होते हैं, वो पैसे ही देते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट और वो वापस अपने पैसे ले लेते हैं। सो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग। जबकि इस्लामिक बैंक्स, मोर ओवर इस्लामिक बैंक्स हैव अ स्ट्रॉन्ग शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क इन टर्म्स ऑफ शरिया एडवाइजरी एंड और अ शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड व्हिच अप्रूव्स ट्रांजैक्शंस एंड प्रोडक्ट्स इन द लाइट ऑफ शरिया रूलिंग। तो इस्लामिक बैंक्स के अंदर एक शरिया बोर्ड होता है, शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क है, उसकी बेसिस के ऊपर वो शरिया बोर्ड अप्रूव करता है कि क्या एक प्रोडक्ट जो है वो सही है अंडर शरिया ट्रांजैक्शंस। जबकि कन्वेंशनल बैंक्स दे डू नॉट इवन केयर अबाउट इट, दे डू नॉट डू एनीथिंग, वो इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग कर रहे हैं एंड दे आर गोना डू इट। सो कन्वेंशनल बैंक्स डू नॉट possess such a framework, which is a key limit test that refutes the claims of those that fail to see the differences between Islamic banks and conventional banks. लास्टली, जो एक मेजर डिफरेंस और इसके थर्ड लेवल के ऊपर है, वो है प्रोडक्ट इंप्लीमेंटेशन के लेवल के ऊपर। सो इस्लामिक बैंक्स प्रोडक्ट्स आर यूजुअली एसेट बैक्ड एंड इन्वॉल्व द ट्रेडिंग ऑफ एसेट्स, the renting of assets and the participation in business on a profit and loss basis, ठीक है। जबकि कन्वेंशनल बैंक्स जो है वो ट्रीट करते हैं मनी को एज अ कमोडिटी और उसको वो लेंड करते हैं और बोरो करते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं एज कंपनसेशन। And Islamic banks consider a loan non-commercial and exclude it from the domain of commercial transactions. Any loan given by Islamic bank must be interest free, ठीक है। तो वो लोन अगर कोई देते हैं वो इंटरेस्ट फ्री देते हैं और वो नॉन कमर्शियल होता है, वो फॉर सम एनी गुड पर्पस हो सकता है, फॉर एनी सोशल कॉज हो सकता है, वो कमर्शियल एक्टिविटीज में यूज नहीं हो सकता, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में यूज नहीं हो सकता, ये इज नॉट अलाउड बाय शरिया। बट कन्वेंशनल बैंक्स हैं, दे ऑलवेज लैंड ऑन इंटरेस्ट और उसी को अपने एक बिजनेस मॉडल के तौर पे यूज करते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। सो कन्वेंशनल ऑल एट कन्वेंशनल बैंक लेवल ऑलमोस्ट all the financing and deposit side products are loan based. Moving on. In a conventional bank, the relationship between the bank and the customer is that of a creditor and a debtor, and any benefit available to either party falls under the ambient of interest, since it is a gain on debt or loan.
In Islamic banking, the relationship between bank and consumer differ as per the modes of finance and the nature of the facility. So ये बात इंपॉर्टेंट है कि एक इस्लाम कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर तो वही क्रेडिटर और डेटर है और वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा ताकि जो मर्जी हो जाए, और जितना भी उसके ऊपर गेन और डेट है उसके ऊपर वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ठीक है। जबकि इस्लामिक बैंक के अंदर डिफरेंट टाइप की बिजनेस की जो रिलेशनशिप होती है कस्टमर के साथ, कभी रेंट बेस्ड हो सकती है, कभी वैसे और डिफरेंट टाइप की ट्रांजैक्शन एसेट सेलिंग की बेस के ऊपर हो सकती है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस based on that nature of the facility that is required by the client. जैसे कि इन सेल बेस्ड ट्रांजैक्शन मोड, Islamic banks and the customer assume the role of a seller and buyer respectively, and any benefit available to either party is profit on the sale transaction. Again, बैंक कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर जो उसके ऊपर वो पैसे चार्ज कर रहे थे इंटरेस्ट था, ठीक है। क्योंकि अगर आप पैसे किसी को लेंड करते हैं और उसके ऊपर कुछ भी और लेते हैं, चार्ज करते हैं, कोई बेनिफिट तक डिराइव करते हैं, दैट वुड बी कैटेगराइज्ड एज इंटरेस्ट इन इस्लाम, ठीक है। जबकि ट्रांजैक्शन के अंदर, बिजनेस के अंदर ट्रेडिंग अलाउड है, और ट्रेडिंग के ऊपर यू कैन से कि प्रॉफिट लिया जा सकता है, ठीक है। देन कम्स इन द रेंटल बेस्ड मॉडल, अगेन उसके अंदर भी रिलेशनशिप जो है इस्लामिक बैंक की कस्टमर के साथ जो है लीजर और लीजी की है, एंड उसका जो बेनिफिट बैंक को मिलता है वो रेंट की फॉर्म के अंदर मिलता है। Then in the participation based model, the relationship between the Islamic bank and the customer is one of a partnership and given taken by the either party in profit or musharka. तो जो मुशारका के अंदर प्रॉफिट आता है तो वो उसका प्रॉफिट हो जाता है। Then in service based models, the relationship between the Islamic bank and the customer is one of mustajir, service provider, and ajir, to whom service is given respectively, and the Islamic bank gets remuneration in the form of the fees it charges, ठीक है। जो उसकी वो सर्विस की फीस चार्ज करता है उसके लिए उसको remuneration मिलती है। सो अभी हम जरा कंपैरिजन देख लेते हैं ऑफ डिफरेंसेस इन द रोल्स बिटवीन कस्टमर एंड बैंक इन द इस्लामिक एंड कन्वेंशनल बैंकिंग। ये उसके शॉर्ट के अंदर आपको ये लिए हाईलाइट कर दिया गया है। सो डिपॉजिट जो होता है वो फाइनेंस की टर्म्स के अंदर जो हो रहा है, ठीक है। अब अगर कन्वेंशनल बैंकिंग में देखें तो जो रोल है बैंकिंग कस्टमर का वो डेटर क्रेडिटर का है या क्रेडिटर डेटर का है। डिपॉजिट करवा रहा है तो डेटर क्रेडिटर का है, अगर फाइनेंसिंग करवा रहा है तो क्रेडिटर डेटर का है। और कंपनसेशन जो मिल रही है वो बैंक को वो इंटरेस्ट की फॉर्म के अंदर मिल रही है या कस्टमर को भी इंटरेस्ट की फॉर्म में मिल रही है। जबकि इन इस्लामिक बैंक अगर वो डिपॉजिट करवा रहा है तो मुदारिब वो एज अ मुदारिब एंड रब्बुल माल डिपॉजिट करवाता है, और जो उसको कंपनसेशन मिलती है वो प्रॉफिट और मुदारबा मिलती है। वेर अगर वो फाइनेंसिंग करवाता है तो वो जो रिलेशनशिप बनती है अब डिपेंडिंग ऑन के किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, सेलर बायर की बन सकती है, लीजर लीजी की बन सकती है, पार्टनर्स की बन सकती है, एजेंट प्रिंसिपल की हो सकती है। और उसके अगेंस्ट वो प्राइस जो होती है सामान के अगेंस्ट प्राइस होती है सेलर बायर के केस के अंदर, लीज के अगेंस्ट रेंट होता है, और पार्टनर्स के अगेंस्ट प्रॉफिट, और एजेंसी के अगेंस्ट वो फी चार्ज करते हैं अपनी। As is evident from the table above, conventional banks only get compensation in the form of interest. They do not assume risk of any trade based activities, whereas according to the Sharia, no gain can be taken without risk. Therefore, when the Islamic bank gets compensation, reward in the form of price or rent or profit in participation, it assumes full risk of the asset in a sale or rent transaction and full risk of the performance of the business and its asset in a participation based transaction. तो वो पार्टिसिपेशन बेस्ड ट्रांजेक्शन के अंदर भी फुल रिस्क लेता है जितनी उसकी इन्वेस्टमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग। बैंक जो है वो पूरा रिस्क अज्यूम करता है, जबकि इन इस्लामिक बैंक जो है वो पूरा रिस्क अज्यूम करता है अपनी फुल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, जबकि कन्वेंशनल बैंक ये रिस्क नहीं लेते। Now, product-wise comparison between conventional and Islamic banks. The conventional banks, which is interest-based, perform the following major activities: deposit creation करते हैं, financing करते हैं, agency services provide करते हैं, issuing letter of guarantees या letter of credits, advisory services, other related services जो है वो provide करते हैं। जबकि इस्लामिक बैंक क्या करते हैं, वो डिपॉजिट्स लेते हैं जिसके अंदर दी लायबिलिटी साइड जो होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। सो डिपॉजिट ऑफ कन्वेंशनल बैंक जो कि कर्ज होता है, लोन नॉट अमाना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि बैंक आपसे जब भी पैसे लेता है वो हमें लगता है कि हम अमानत के तौर पर रखवा रहे हैं, जबकि हम अमानत नहीं एज अ लोन दे रहे होते हैं, बिकॉज अमानत की कुछ कंडीशंस हैं। नंबर वन, अमानत के तौर पे दी गई चीज को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और वही की वही चीज, यानी कि अगर आपने जो करेंसी नोट दिया वही करेंसी नोट वापस देना होगा।
आप कोई और दूसरा करेंसी नोट उसकी जगह वापस नहीं दे सकते अगर अमानत होगी तो। सिमिलरली उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उससे कोई बेनिफिट नहीं हो सकता, उससे किसी को लोन नहीं दिया जा सकता। तो ये दोनों कंडीशंस की वजह से बेसिकली अमानत नहीं होती, ये लोन के तौर पे आप पैसे बैंक में जमा करवाते हैं। So the common misconception regarding deposit is that it is a form of amana, security, a trust. However, according to the Sharia definition, deposit has more of a resemblance to qard, loan, than amana. This conclusion is based on the fact that in Islam, an item is termed as amana if it bears all the features of amana. Deposit can be termed amana as they do not have uh, कैन नॉट बी टर्म्ड माना इज डू नॉट हैव टू ऑफ इट्स स्पेशल फीचर्स। ओके, एक और अमानत के अंदर जो फीचर होता है वो ये भी होता है कि अगर वो चोरी हो जाए तो वो वापस नहीं की जाती अमानत। वेरएज कि अगर आप बैंक को पैसे देते हैं और वो चोरी हो जाए बैंक से तो फिर वो वापस किए जाते हैं आपको, इसलिए ये कर्ज होता है। जबकि कर्ज के बारे में यही है कि कर्ज अगर चोरी भी हो जाए तो भी आपको वापस करना होता है। सो ये जो फीचर्स हैं वो यही बता रहे हैं, अमाना कैन नॉट बी यूज बाय द बैंक फॉर इट्स बिजनेस और बेनिफिट्स। द बैंक कैन नॉट बी लायबल इन केस ऑफ एनी डैमेज और लॉस टू द अमाना रिलेटिंग फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड इट्स कंट्रोल। सो ये दोनों कंडीशंस को क्या फुलफिल नहीं होती, इसलिए ये अमानत नहीं होता, ये लोन होता है। वेयर इज इन बैंक्स deposits are primarily placed to earn profit, which is only possible when the bank uses the deposits to invest in other businesses. Hence, deposits do not fulfill the first condition of amana, which states that it should not be used by the caretaker for his own business or benefit. Secondly, the bank is held 100% responsible for these deposits in all circumstances, even in case of loss or damage to the business to the bank. This feature releases deposits from the ruling of amana, where the asset will be returned in case of any damage to the asset resulting from circumstances beyond the caretaker's control. According to this justification, all three kinds of deposits, namely current accounts, fixed deposits, and savings accounts, are not amana. They are all governed by qars. One school of thought says that only fixed deposits and saving accounts fall under the laws of qard, but a current account is governed by amana. However, this is also not correct because the bank is as liable to current account holders as it is to the PLS account holders, and is called the guarantor in FICA terminology. Due to this feature, the current account is also governed by qard, yeah, loan. The depositors are not interested in the terminology but the end result of holding an account. Therefore, it is a if a bank does not offer security to the assets, the depositors under normal circumstances will never keep their assets at such a bank. Similarly, if the depositors are told that the status of their account will be that of amana, and in case of any loss of the asset without any negligence of the bank, the assets will not be returned to them, no one would put their assets in the bank. Therefore, the bank provides the security to the assets which the depositors themselves want. We therefore conclude that the main intention of the depositors is not to put the asset in bank at amana, rather as qard by having collateral security by appointing the bank as guarantor. Example of Sayyidina Zubair bin Awan, may Allah be pleased with him, so Hazrat Zubair bin Awan anhu, was famous and well known for his honesty and trustworthiness. Prominent people used to leave with him their properties in trust. Based on their needs, they would also withdraw all or part of their properties. It has been reported in Bukhari and Tabarakat Ibn Saad in respect of Hazrat Zubair bin Awan anhu, that he declined to accept such property as Hamana trust, but rather accepted them as Qard loan. The reason for this action on his part was his fear that the property may be lost, and it may be suspected that he was negligent in its safekeeping. And so he decided to consider it a loan so that the depositor felt more comfortable. Another reason for it was that it could become possible for him to employ these funds to trading and earn profit out of them. The loan amount, calculated at 2.2 million dirhams at the time of his death by his son Sayyidina Abdullah ibn Zubair, may Allah subhanahu wa ta'ala be pleased with him, anhu, was specified as qard, not amana. He also used the term loan while instructing his son before his death, son, dispose of my property to settle the loans. So, to conclude it all,
From the above discussion, we come to the conclusion that all three forms of banking deposits are governed by the law of qard, as a consequence of which the account holder may withdraw only the assets deposited. Any increase on it will be interest. It has already been discussed in the chapter of commercial interest, that if the purpose of the lender is business or security and not providing financial assistance, then to get an excess amount is also interest, which is prohibited in Islam, like just like usury. ठीक है, तो उसके अगर कोई कोई कमर्शियल इंटरेस्ट के ऊपर लोन दे रहा है तो उसके अगेंस्ट अगेन जो भी पैसे आ रहे हैं वो इंटरेस्ट ही क्लासिफाई होंगे. It is also clear that there is a consensus of Muslim scholars on the point that the transaction in fixed deposit and saving accounts are prohibited because the bank pays access to their account holders over their actual capital, which is interest. The Islamic Fiqh Academy, Jeddah, in their second session, has further endorsed such transactions as interest based transactions. Therefore, it is illegal for a Muslim to keep their deposits in such accounts. As far as the current account is concerned, the bank does not pay any excess interest over the actual capital. Therefore, holding such an account is allowed. To sum up the above discussion, it is concluded that profit given on fixed deposits and savings accounts by conventional banks is interest and therefore prohibited. However, if the banking system is based on Islamic principles, musharka, mudarba can play a very important role. As far as deposits are concerned, musharka or mudarba is the only instrument through which money can be received from customers, meaning that every depositor will become a partner in the bank's business through their deposited money. The methodology of musharka or mudarba based deposit structure is discussed in detail in chapter titled Musharka in Bank Deposits. ये भी हम डिस्कस करेंगे. Then the financing activities. The asset side of any bank involves financing activities of the bank. In conventional banks, the asset side comprises of loans given to financial entities with different names like lease, running finance, term finance, etc. While the difference among them is only in the treatment of security or amortization. Since all the financing products are based on loan, therefore the compensation obtained by conventional banks from these financing products falls under the ambient of benefit driven from a loan transaction, which is रिबा. क्योंकि वो सारी की सारी लोन बेस्ड ट्रांजेक्शन होनी, चाहे जो भी नाम दे दे वो, क्योंकि उनकी अमोर्टाइजेशन डिफरेंट है, उनकी सिक्योरिटाइजेशन डिफरेंट है, इस वजह से डिफरेंट नाम दिए जाते हैं, रनिंग फाइनेंस, लीज, टर्म फाइनेंस. लेकिन वो एक्चुअली क्योंकि इंटरेस्ट चार्ज करो तो इसलिए वो प्रोहिबिटेड है, रिबा बेस्ड है, वो हम इस्लामिक बैंक्स नहीं कर सकते. जबकि अगर आप एसेट साइड देखें इस्लामिक बैंक्स की, तो दी ऑन द एसेट साइड ऑफ इस्लामिक बैंक्स, द एसेट साइड ऑफ इस्लामिक बैंक रिफ्लेक्ट्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स व्हिच आर बेस्ड ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग मोड्स which are also discussed in detail in other chapters of this book. तो ये सारे जो आगे मोड्स आ रहे हैं दोबारा एक बार डिस्कस होने जा रहे हैं, इनके ऊपर ही सारे ट्रांजेक्शन बेस्ड हैं, या सेल बेस्ड मॉडल्स होंगे, ठीक है, जिसके अंदर अंडर दीज मोड्स एन इस्लामिक बैंक इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग लोन sells asset to the customer and gets the compensation in form of price, which includes profit of the bank as a result of the sale transaction. It is important for any sale based mod that Islamic bank must sell the asset to the customer after acquiring the asset and assuming all its risk. Example of sale based modes are मुराबहा, मुसावमा, सलम, इस्तना, इस्तजरार. ठीक है. इसी तरह से पार्टिसिपेशन बेस्ड मोड आ जाता है जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, ठीक है, एज पार्टनर्स. इन पार्टिसिपेशन मोड इस्लामिक बैंक एंटर्स इनटू अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद द कस्टमर ओवर देयर business and shares the profit or loss as per the actual performance of the business. The example of participation based model is musharka or mudarba. सिमिलरली रेंट बेस्ड मॉडल्स, रेंटल बेस्ड मॉडल्स जिसके अंदर रेंट के ऊपर बेस पर ट्रांजेक्शन चल रही होती है. इन रेंटल बेस्ड मॉडल्स द इस्लामिक बैंक एक्वायर्स द एसेट एंड आफ्टर अज्यूमिंग इट्स ओनरशिप एंड रिस्क gives the asset on rent to the customer for a defined definite period. तो उस डेफिनेट पीरियड के लिए रेंट पे देता है और उसके ऊपर जो रेंट चार्ज होता है वो उसकी इनकम हो जाती है. The Islamic Bank takes its compensation in the form of the rent for the use of the assets by the customer. Example of rental based models are ijara, diminishing musharka. ठीक है.
देन एजेंसी बेस्ड ट्रांजैक्शन, जिसके अंदर बैंक बेसिकली एजेंट बन जाता है और उसके लिए फीस चार्ज करता है. द बैंक अंडर द शरिया कैन एक्ट एज एन एजेंट और वकील ऑन अ वकाला बेसिस, अल वकाला बेसिस of the customer and can carry out the transaction on his behalf. Moreover, it can charge an agency fee for the service. The agency fee can be charged in the following case. जो पेमेंट को और रिसीविंग ऑफ कैश ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर अगर वो कोई करता है तो उसके ऊपर वो एजेंसी फी चार्ज कर सकते हैं. इसी तरह से इनवर्ड बिल ऑफ कलेक्शन आता है उनके पास, उसके ऊपर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो वो उस पर अपनी फीस चार्ज कर सकते हैं. इसी तरह से आउटवर्ड बिल ऑफ कलेक्शन के ऊपर वो कोई सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहा है तो उसके ऊपर वो अपनी सर्विस की फीस चार्ज कर सकते हैं. इसी तरह से एलसी ओपनिंग या एक्सेप्टेंस के ऊपर भी वो अपनी फीस चार्ज कर सकते हैं. इसी तरह से कलेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट बिल्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इन दिस केस द अंडरटेकिंग और गारंटी commission and take up commission can be Islamized. Bank will charge an agency fee for accepting the bills which is brought at face value. Then underwriting and initial public offering की services वो क्योंकि provide करते हैं तो उसके against भी वो charge कर सकते हैं. One major difference between an Islamic bank and conventional bank under this category is that an Islamic bank can only carry out such transactions which are Sharia compliant. तो non Sharia compliant transaction Islamic bank नहीं कर सकता. Then the role of bank as a guarantor. So the bank or financial institution gives a guarantee on behalf of the customer, but according to the Sharia, guarantee fee cannot be charged since the act of guaranteeing is an non-compensatory contract and fee cannot be charged for any non-compensatory contract. However, a fee can be charged if some additional services are provided to the customers. Some of the common types of guarantees issued by banks are as follows. सो बिड बॉन्ड्स हो सकते हैं, परफॉर्मेंस गारंटी हो सकती है, इसके अलावा शिपिंग गारंटी हो सकती है. ठीक है, ये वो जो है वो बैंक गारंटीज प्रोवाइड करते हैं. फिर बैंक अगर कोई एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर को तो ये भी एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर भी चार्ज कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन बी carried out easily in compliance with the Sharia as long as the nature of the business is halal. So उसके अंदर कोई prohibition नहीं है कि आप एडवाइस नहीं कर सकते बिजनेस को सर्विसेज के लिए, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते. तो इसके अंदर फाइनेंशियल एडवाइस सर्विस होते हैं कि फाइनेंशियल अपनी परफॉर्मेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं. प्राइवेटाइजेशन के ऊपर हो सकती है एडवाइजरी सर्विसेज, इक्विटी प्लेसमेंट पे हो सकती है, मर्जर और एक्विजिशन के ऊपर एडवाइस दे सकते हैं, वेंचर कैपिटल के ऊपर दे सकते हैं, ट्रेडिंग कैपिटल मार्केट ऑपरेशंस के ऊपर दे सकते हैं, देन कैश एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की एडवाइस दे सकते हैं, ब्रोकरेज सर्विसेज की परचेज एंड बाइंग ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनीज involved in halal businesses. A fee could be charged for it. Then other allowable Islamic financial services जो प्रोवाइड कर सकते हैं वो रेमिटेंस की, ज़कात डिडक्शन की, सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी की, सेल एंड परचेज ऑफ ट्रैवलर्स चेक्स जो कि कोई लोग ले जाते हैं अक्सर ही लोकल या फॉरेन करेंसी के अंदर ट्रैवलर्स चेक अगर उन्हें चाहिए हो तो. फिर एटीएम सर्विसेज की, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन ट्रांसफर्स की, टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स के लिए, इस तरह से डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, लॉकर्स और जो कस्टोडियल सर्विसेज होती हैं, सिंडिकेट फंड्स अरेंजमेंट सर्विसेज जो होती हैं उसके लिए, नॉन इंटरेस्ट और मार्कअप बेस्ड जो होंगी उनके लिए. ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट करंट या ऑन इंटरेस्ट और ऑन मार्कअप, नॉन इंटरेस्ट या ऑन मार्कअप जो है वो नहीं, उसके लिए अगर अकाउंट ओपन करे उसके लिए वो फीस चार्ज कर सकते हैं. क्लियरिंग फैसिलिटी, जबकि बैंक क्लियरिंग हाउस होता है उसके लिए कोई फीस चार्ज कर सकते हैं. सेल्स एंड परचेजिंग ऑफ शेयर्स या स्टॉक ऑफ कंपनीज इन्वॉल्व इन हलाल एक्टिविटीज, कलेक्शन ऑफ डिविडेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग विंडो अगर है उनकी तो उसके लिए, या टेलीफोन बैंकिंग के लिए वो चार्ज कर सकते हैं. न्यू चैलेंजेस फॉर द इंडस्ट्री, क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री रैपिडली डेवलप हुई उसके लिए काफी सारे न्यू चैलेंजेस भी इमर्ज कर रहे हैं. With all its success and growth, the Islamic banking industry is still in its early stages and there is a long way to go. This industry has to overcome many challenges in order to achieve a large market share and sustain its growth. Some of the challenges that the Islamic banking industry faces today include lack of awareness and skepticism at different levels, including investors, bankers, रेगुलेटर्स, रिसर्चर्स एंड कस्टमर्स. तो एक लैक ऑफ अवेयरनेस है, स्केप्टिसिज्म है कि डिफरेंट लेवल्स के पर इन्वेस्टर भी समझते हैं, बैंकर्स भी, रेगुलेटर्स भी, रिसर्चर्स, इवन कस्टमर्स को भी समझ नहीं आती कि कितना इस्लामिक है इस्लामिक बैंक. Then, being a new industry, a major challenge in its growth is the worldwide shortage of trained human resource in Islamic banking and finance. So, worldwide shortage है in the trained human resource of Islamic banking and finance. Moreover, a limited number of Sharia scholars that create over reliance and raise questions about Sharia compliance of the institutions involved. क्योंकि बहुत कम Sharia scholars हैं जो इसके अंदर डील कर रहे होते हैं, तो इसलिए ये एक बड़ा इशू है कि Sharia scholars कम है इस एरिया के अंदर. Focus efforts needed for new product development and research. तो अगेन काफी सारी फोकस करके एफर्ट डालनी पड़ती है उसके अंदर कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट अगर करनी हो तो वो एक बड़ा
लेंथी टास्क है पूरा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। सॉल्यूशंस फॉर लिक्विडिटी मैनेजमेंट एंड क्रिएशन ऑफ इस्लामिक इंटरबैंक मार्केट। तो ये भी एक बहुत बड़ा एरिया है कि जहाँ पर लिक्विडिटी मैनेजमेंट और इस्लामिक इंटरबैंक मार्केट को क्रिएट करने का कोई तरीका ढूंढा जाए। देन एडवांसेस ऑफ अ सेपरेट रेगुलेटरी absence of a separate regulatory, legal and risk management framework to cater to the specific needs of Islamic banking industry, क्योंकि जनरल जो बैंकिंग की हैं वो इन पे अप्लाई हो रही हैं इस वक्त, लेकिन कोई स्पेसिफिक इनके लिए नहीं है। So that's it for today. Next time we'll discuss chapter 21, Musharka in bank deposits. Thank you. Assalamu alaikum students.